Okay. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है 1 मार्क सोल्यूशन। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक 1 मार्क सोल्यूशन का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार जो डिफरेंट जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है वो 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज हमारे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 1। सो क्लास 7th का चैप्टर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और इस चैप्टर में निश्चित रूप से जो चैप्टर 1 है हमारा वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं मैडम पूनम शर्मा जी। मिसेस पूनम शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। Thank you, और sir. बच्चे बहुत Thank you, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हमारा जो सेशन है, इस सेशन में भी बच्चे चैप्टर 1 जो आपका है प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसके बारे में बच्चे सीखेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर से। जो उनके जो होम एग्जाम्स होते हैं, जो उनके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बच्चों को आज आप डिस्कस करेंगे। सो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैम अभी HJSS पिलानी राजस्थान में TGT साइंस के पद पर कार्यरत हैं। मैम ने आगरा यूनिवर्सिटी से जो है वो BSc एंड MSc किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है। और साइंस में लगातार कई सालों से जो है TGT साइंस के रूप में काम कर रही हैं। सो साइंस में जो I think there is a network problem. Hello? Hello? हेलो सर। ऐड आ गया, आप लाइव हो, आपकी आवाज आई, सर का कुछ हो गया, ऐड आ गया बीच में। ओके। Okay. Hello and good evening to all of you. We are meet again for the chapter 1 class 7, which is nutrition in plant. So we will start with, first we should know that what the topic we have to cover in this chapter, what we have to read in this chapter, study what we have to study about this. So first we should know the topics. So these are the nutrition in plant, mode of nutrition in plants, photosynthesis, other mode of nutrition in plant, saprotrophs, how nutrients are replenished in the soil. So here we go. The first section of our presentation is choose the correct option in the following question. In this section, student, you have the question in which you have the 4 options. One is correct only. So you have to choose the right one. So here we have our first question is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. This process is called the mode of taking food. Read questions very carefully, beta. The mode of taking food. Mode of taking food, yani when the organism taking food in by an organism and utilization of that food by their body. This process is known as photosynthesis, nutrition, heterotrophic mode of nutrition, it's autotrophic mode of nutrition, it's simple nutrition, यानी कि भोजन लेने की प्रक्रिया है ये. Now, photosynthesis क्या है? This is the process of nutrition, a type of process. And heterotrophic is a mode of nutrition. Autotrophic is also mode of nutrition. Now come to the next question. The mode of nutrition in which organisms make food themselves
from simple substance is called, यानी the mode of nutrition, यानी कि mode खाना खाने की वो प्रक्रिया है, बनाने की वो प्रक्रिया, in which organism, जिसमें कि अपने आप बनाता है, food make their food themselves, अपने आप खुद से, self, from और by कैसे बना रहा है, by the simple substance, और उन सब फिर उनको क्या बोलेंगे वो, what we call them? Number 1, autotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition, photosynthesis, and none of these. In this question you have read that themselves, यानी खुद से, अब खुद से हो रहा है तो autotrophic, auto, self service, auto, तो इसका आंसर is autotrophic mode of nutrition. Now move to the next question. Animal and most other organism take in food prepared by plants. Animals and most other organism take in food prepared by plants, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स या कहें अदर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, rather than plants, यानी प्लांट्स को छोड़कर अपना खाना किससे ले रहे हैं, they are taking food in by the जो कि खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, prepared by plant, उसको ले रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, they are called heterotrophic, autotrophic, photosynthesis, none of these. ऑटोट्रॉफिक अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, ऑटो यानी जो खुद से बना रहे हैं, यहाँ पर हम खुद से बनाने की बात तो कर ही नहीं रहे, हम यहाँ कह रहे हैं दे आर टेकिंग फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, तो ऑटोट्रॉफिक तो होने से रहा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग फूड, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इट्स हेटरोट्रॉफिक, our answer will be heterotropic. Now come to the next question. The process by which green plant turn carbon dioxide and water into food in the presence of sunlight, this process is known as, यानी कि वो process, वो प्रक्रिया by which green plant अपना खाना बनाते हैं in the presence of sunlight or with the help of carbon dioxide, water. This process is known as, number 1 option we have respiration, photosynthesis, digestion, none. Respiration is a, आप ये कहेंगे जब इन होती है, ऑक्सीजन इन होती है, हमारा ब्रेक डाउन होता है फूड का, वो कहलाता है रेस्पिरेशन, इन करना, ऑक्सीजन का गिव एंड टेक होता है, ऑक्सीजन का इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेशन होता है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल फिनोमेना इन विच फोटोसिंथेसिस इज द फिनोमेना इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, डाइजेशन ऑल ऑफ यू नो दैट, जिसमें कि हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर विल बी इट्स फोटोसिंथेसिस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Plants food factories are where the plant or which part of the plant they prepare their food, तो आंसर इज किचन का है उनका. नंबर 1 रूट, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, it will be leaves. Now the raw material required for photosynthesis are, raw material यानी कि क्या क्या raw material, कच्चा सामान, when you preparing something dish in the kitchen you have to need some material, as like same as plants also required, so what they require for photosynthesis, what they require for making their food, these options are water, carbon dioxide, and sunlight, none. It's water, carbon dioxide, and sunlight. Plant need to prepare their food water, carbon dioxide, and sunlight. Now come to the move for the next question. Water and minerals present in the soil are absorbed by. Now listen, the water and minerals present in the soil. कहाँ पर है वो? Where they are? They are found in soil. Are absorbed by. अब वो कहाँ से absorbed by? Soil से हो रहे हैं water and minerals. लेकिन किसके द्वारा हो रहे हैं? From by stem, leaves, roots. आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमने क्या कहा है? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय. तो वो सॉइल में है. सॉइल में कौन सा पार्ट होता है? विच प्लांट इनसाइड द सॉइल? इट्स रूट. तो आंसर विल बी रूट. अवर आंसर विल बी रूट. तो रूट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट करती है अपर पूरे प्लांट को. नाउ नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन बाय लीव्स थ्रू. नाउ फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिल रहा है प्लांट को? फ्रॉम द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट.
Now next जो raw material है वो है carbon dioxide, which is plant getting from air by the help of leaves. और leaves का भी कौन सा part? Through leaves by stem, roots, stomata, none of these. Obviously it's stomata. Stomata will be our answer. Stomata is the tiny pores which is found on the leaves. Now, the tiny pores present on the surface of leaves through which gaseous exchange occurs are called. तो उन tiny pores को हम क्या बोलेंगे? As I says, stomata, guard cell, food holes, gas holes. It will be stomata, obviously. The tiny pores which is found on the surface of leaves. Now, these pores surrounded by. Now we are talking about the stomata. तो stomata किसके? उनके चारों तरफ क्या होता है? क्या surrounded होता है उनके? Now, cytoplasm is this cytoplasm, guard cell, leaves, none. It's guard cell. As the name suggests, नाम से ही आपको पता चला है guard cell. Guard कहाँ होता है? गेट पर. तो tiny pores के जो surrounded होते हैं वो guard cell होते हैं. उनको हम guard cell बोलते हैं. जो responsible होते हैं, guard cell will be responsible for opening and closing of the stomata. Water and minerals are transported to the leaves by. Up now, the question is last question, the previous one question में हमने discuss किया था, plant water and minerals absorbed by plant by the roots की मदद से ऊपर तो आ गया, अब वो leaf तक कैसे पहुंचेगा? Water and minerals are transported to the leaves by. Now, root, stem, vessels, all of these is vessels. As our system, we have the circulatory system. Blood is the transportation tissue in our body which provide us many minerals. Like the blood होता है हमारी body में, transport होता है in the vein, arteries. उसी की तरह in the same way, plants also have vessels which transport all the minerals, water, food, material, whole body of the plant. The leaves have green pigment called. एक green pigment पाया जाता है leaves में, जिसकी वजह से उनका color भी green होता है. The leaves have green color due to this pigment. तो उस pigment का नाम क्या? What is the pigment name? Number one is chlorophyll, green, xanthophylls. It's none. It's chlorophyll. The pigment name is chlorophyll. Due to this, leaves look green. Now, which is the ultimate source of energy for all living organisms? Which is the ultimate source of energy for all living organism? यानी कि सारे living organism के लिए ultimate source क्या है? Any guesses? Okay. Earth, sun, moon, star. सोचे comment box में लिखे बेटा. तो here I am giving the answer. It is sun. Can you explain in comment box how it is sun? I will explain you, because sun is the ultimate source as in this question we have. Because sun, without sun, green plant cannot make their food. In absence of in the absence of sun, the green plant cannot prepare their food. Or in the last previous question we discussed that the all living organisms directly or indirectly depend for their food on the plant. If green plant cannot prepare their food, the all living being, the food chain will be broken. Food chain will be broken and green plant also died. So there will be no life, no oxygen, no food. So you can say that the sun is the ultimate source of energy on the earth. Now, in the absence of photosynthesis, there will be no. The same question. In the absence of photosynthesis, there will be no food, no oxygen, both A and B, none. It's obviously both A and B. Both A and B. If there will be no photosynthesis, there will be no oxygen, there will be no food. As you can, and you can also say that there will be no life on the earth. Beside leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plants. Beside leaves, यानी leaf के अलावा, photosynthesis also take place in other green parts of the plants. यानी कि जो photosynthesis है leaf के अलावा plants के कई और हिस्सों में other green parts में भी होता है. वो कौन कौन से हैं? Green stem, green branches, both A and B. None of these. यानी कि ये both A and B. As the question में आपसे पूछा गया है, other green part,
यानी ग्रीन पार्ट, तो ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस ये, लेकिन ये तभी तक होता है जब प्लांट अर्ली एज में होता है, जब वो छोटा होता है, जब यानी उसका स्टेम और ब्रांचेस बहुत पतले और सॉफ्ट होते हैं, तब वो ग्रीन होते हैं और वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं फॉर मेकिंग फूड, बिकॉज प्लांट तब उस ग्रोइंग एज में होता है, वो बढ़ रहा होता है, उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज वाई। तो ये इसके सारे जो ग्रीन स्टेम्स है, ग्रीन ब्रांचेस है, ये भी खाना बनाने में मदद करते हैं प्लांट्स की। लॉस ऑफ वाटर बाय लीफ इज कॉल्ड, लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स इज कॉल्ड, जैसे आप स्वेटिंग करते हो, प्लांट भी स्वेटिंग करता है, एक्सेस ऑफ वाटर दे विल रिलीज बाय द टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द लीफ सरफेस, व्हिच वी डिस्कस इन लास्ट क्वेश्चन, इज इट्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो लॉस ऑफ वाटर होता है, लेकिन इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? द लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन, both A and B, none of these, it's transpiration, transpiration। evaporation में क्या होता है? In which evaporation, what is happen in evaporation? When water will be hot या heat energy, we will give heat energy, it water will, yani liquid, any liquid can transfer into vapors, this process is called evaporation। ट्रांसपिरेशन, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन में पानी गर्म होकर होता है, इसमें अपने आप से एक्सेस वाटर रिलीज हो रहा है बॉडी से, प्लांट की लीफ से रिलीज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच गैस इज रिलीज, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होते समय कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हियर वी हैव द ऑप्शन ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नन। ओके, तो अभी हमने लास्ट पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है, तो निकलेगी तो है नहीं, रिलीज्ड माने निकलती है। ओके, ओजोन नो, इट्स ऑक्सीजन, इट्स ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। हाउ वी कैन टेस्ट द फूड स्टोर इन द लीफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, as we can say the green plant prepare their food, तो अब ये प्रूव कैसे करेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स की, जो भी हमने फूड फैक्ट्री भी बोला कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट इज लीव्स, यानी जो खाना बनाने की जो जगह है, किचन है प्लांट की, जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स है, तो यानी उसमें खाना स्टोर हो रहा है, बन रहा है, तो हाउ वी कैन प्रूव दैट द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, और उसमें खाना स्टोर हो रहा है, तो वी हैव टू प्रूव इट। तो इसको प्रूव करने के लिए वी हैव टू डू सम टेस्ट, तो हाउ विल वी प्रूव? और ऑप्शन इज आयोडीन टेस्ट, पीएच टेस्ट, लीफ टेस्ट और नन। इट्स आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, जिस लीफ में खाना बना है उसको हम प्लग करके रखते हैं और आयोडीन सोल्यूशन में उसको डिप करते हैं, तो जो लीफ है वो ब्लू, डार्क डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज प्रूव दैट उसके अंदर खाना है, उसने जो खाना बनाया वो स्टार्च, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये आयोडीन टेस्ट से प्रूव होता है कि जो लीफ के अंदर जो खाना स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से हुआ है। नाउ द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव, is a very important and confusing question also, the leaves other than green also have some, जैसे कि बार बार बच्चे पढ़ते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी पत्तियां आपने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है, सम लीव्स आर ग्रीन और मिक्स रेड पे येलो पिंकिश इस तरह से की भी होती है, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनमें खाना नहीं बनता, उनमें भी बनता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो है, उनमें भी क्या होता है? तो और ऑप्शन इज chlorophyll, xanthophylls, fat, none, it's chlorophyll, they also have chlorophyll। हाँ, it is okay कि उनमें कम होता है, they have less amount of chlorophyll, क्योंकि उसी वजह से उनका कलर ग्रीन नहीं हो रहा। अगर वो पूरा ही ग्रीन होता है यानी उनमें एक ही तरह का पिगमेंट है, उनमें कई तरह के पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो वो जिसको चितखबरा कलर भी बोलते हैं हम, कई मिक्सिंग कलर, क्रोटॉन्स की लीव्स अगर आपने देखी हो तो हैव यू सीन। Now come to the next question. We often see slimy green patches in the pond of stringent water bodies, what they are। आपने स्लेमी वाटर, ये जो काई जैसे जम जाती है, ठहरा हुआ पानी जिसको बोलते हैं, ग्रीन पैचेस आपने देखे होंगे पॉन्ड से मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? व्हाट दे आर? फंगस, एल्गी, बोथ ए एंड बी, नन, इट्स एल्गी। Algae is a small unicellular organism, it's a autotrophic organism which can also prepare their food own, because it's have chlorophyll, that is why there's look green patches। आप जो कह रहे हैं ये ग्रीन इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। Now come to move to the next question, which is a plant gives shelter and food to other plant for its growth is called
गेस्ट, होस्ट, पैरासाइट, नन। इट्स होस्ट, पैरासाइट डिपेंडेंट हो गया, गेस्ट आने वाला हो गया, होस्ट यानी जो दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, इट विल बी द आवर आंसर। यानी कि जो प्लांट दूसरे प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए खाना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो होस्ट प्लांट हो गया, यानी उस पर डिपेंडेंट हो गया। जो जैसे कि कोई भी प्लांट, इसमें कोई भी प्लांट आ सकता है, जैसे कस्कुटा एक बेल होती है जो पैरासाइट होती है, वो किसी भी प्लांट पे उग जाती है, उग रही है, तो वो जो जिस पर उगी वो हो गया होस्ट, और वो तो पैरासाइट है, जो उसके ऊपर आ गई वो कस्कुटा इज अ पैरासाइट। The plant who take food from the host plant, they are called, यानी plant who take food from the host plant, यानी कि जो host plant से खाना ले रहे हैं, जिसकी अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहे थे आपसे, तो parasites, host, insectivorous, none, it will be parasite, यानी host से जो खाना ले रहा है वो parasite। Now insect eating plant are called, insect eating plants are called parasite, insectivorous, heterotrophic, all of the above. So insect eating plants are called insectivorous, insect eating plants are called insectivorous plants। okay, अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आर लिविंग इंक्लूडिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड, वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड लिव टुगेदर, और वो साथ रह रहे हैं। One provides shelter, one of them is providing shelter, water and nutrients, यहाँ food का नाम नहीं आया अभी। One provides shelter, water and nutrients, यानी उनमें से एक तो पानी दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, शेल्टर दे रहा है एक को, while the other prepares and provide food, यानी कि दूसरा क्या कर रहा है, खाना बना रहा है और प्रोवाइड भी करवा रहा है दूसरे को, फूड बना रहा है और उसको दे रहा है, और दूसरा क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ठीक है। Such an association of an organism is termed as, अब उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बियोसिस, पैरासाइट। पैरासाइट हो नहीं सकता, पैरासाइट में क्या है, सिंपल होस्ट के ऊपर एक दूसरा प्लांट डिपेंडेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाता है, वो किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता, अपना खाना सब कुछ बना रहा है। सैप्रोफाइटिक which take their food from dead and decaying matters, तो ये भी नहीं हो सकता, our answer will be symbiosis। symbiosis is the combination of two plants, and आप इसको नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरियम कह सकते हैं। लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, जिसमें एल्गी और फंगल एक साथ रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक जना उसको, राइजोबियम इज द एग्जांपल ऑफ, ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस एसोसिएशन, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या करते हैं, एक खाना बनाता है, एक शेल्टर देता है, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट एंड वाटर एंड शेल्टर देता है। जैसे कि सपोज आप शेयरिंग, नेचर हमको बहुत कुछ सिखाती है, तो नेचर में क्या है, शेयरिंग, शेयरिंग इज अ केयरिंग, तो वी लर्न वेरी मच फ्रॉम द नेचर। तो नेक्स्ट, मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The end products of photosynthesis are, the end products of photosynthesis are, यानी कि photosynthesis जब हो जाती है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर वेपर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। इट्स विल बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, यानी प्लांट अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a parasite? Which one of the following is a parasite? Lichen, Cuscuta, pitcher plant, rhizobium। तो अभी जैसे मैंने बताया, लाइकेन इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस, राइजोबियम, लाइकेन, तो ये दोनों तो नहीं है। पिचर प्लांट इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, कस्कुटा इज विल बी द इंसेक्ट, इट विल बी द पैरासाइट, तो अवर आंसर विल बी कस्कुटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, हिंदी नेम इज अमरबेल। नाउ which of the following class of organism belong to saprotrophs? Which of the following class of organism belong to saprotrophs? यानी कि जो अभी मैं आपको ऑप्शंस देने वाली हूँ, उसमें से आपको बताना है which of the following class of organism belong to saprotrophs, उसमें saprotroph को belong करती है। और इससे पहले first you should know the saprotrophs। saprotrophs क्या होते हैं? saprotrophs वो organisms होते हैं which they are taking food from dead and decaying matters, जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी कि सड़े गले मरे हुए पौधों से अपना खाना ले रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। अवर ऑप्शन आर फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स।
तो एल्गी में आपको बता चुकी हूँ, एल्गी ऑटोट्रॉफ होता है, लाइकन सिम्बोजियम होता है और ब्रायोफाइट्स भी होता है. तो आवर आंसर विल बी फंजाई. Fungi is a kind of saprotrophs organism. Okay, move to the next question. The term is used for the mode of nutrition in yeast. The term is used for mode of nutrition in yeast, mushroom and bread mold is. यानी कि इन तीनों का जो हमने नाम लिया है, इनका कौन सा मोड, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? ऑटोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस, सेफ्रोफाइटिक, पैरासाइटिक. इसका आंसर होगा, आंसर विल बी सेफ्रोफाइटिक. क्यों होगा? बिकॉज ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड इज अ काइंड ऑफ फंजाई. ये सब एग्जांपल हैं फंजाई के, यानी कि मशरूम, ईस्ट, ब्रेड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फंजाई. और फंजाई कैटेगरी के हैं और इनके खाने का तरीका क्या है? सेफ्रोफाइटिक, बिकॉज दे आर टेकिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो इनके जो फूड टर्म के लिए, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे, इट विल बी सेफ्रोफाइटिक. Now move from our next section is one word answer. Here you have to give the answer in one word only. The first question is, I am tall but I cannot move. मैं tall हूँ but I cannot move. I am green and can prepare my own food. It will be, what will be our answer? I know, I hope all of you know. It's a tree, phototrophic. Now next, I live in water. People keep me in an aquarium and feed me. Fish and heterotrophs. Fish depend है दूसरों पर खाने के लिए, अपना खाना खुद नहीं बनाती तो heterotroph होगी. All animals, mostly though, all animals are heterotrophs. I am small and I can fly. I am small and I can fly. I disturb your sleep, bite you, काटता भी हूँ, आपकी sleep भी खराब करता हूँ, and suck your blood, which is my food, जो कि मेरा खाना है. Mosquito, parasite, यानी वो हमारे blood पर depend है. I am white and soft. I grow well in the rainy season. I am white. Listen carefully. I am white and soft. I grow well in rainy season. Children pluck me from the ground and admire me. I observe nutrient from decomposed dead part of plants and animal in the soil. Mushroom, saprophytes. Mushroom जिसको आप कुकुर मुत्ता भी बोलते हैं. Mushroom की सब्जी खाते हैं ना सब, ये वही है. Now, our next section is matching. We have one matching for you. So match the following items given in column A with that in column B. So column A we have autotrophs, heterotrophs, parasites, saprotrophs, symbiont, insectivorous. And column B we have fungi, lichen, pitcher plant, algae, man, and Cuscuta. So here we have start our matching. Autotrophs match with algae. Because autotrophs, algae is autotrophs, अपना खाना खुद बना, they can prepare their food on. Heterotrophs, man, obviously all animal, human beings also belong this, man, woman, whatever human category you can say that, the heterotrophs, because we can depend for their food for plants. Okay. Now parasite, Cuscuta, it's take their food from host plant. Saprotrophs, fungi, it's derive their food from dead and decaying matter. Symbiont, lichens is a combination of two organisms. One is giving water and nutrient shelter, and other is giving food. Insectivorous, pitcher plant eat insect. Now the next section, move for the next section, which is fill in the blanks. Here we have first blank is all organisms take dash and utilize it to get energy for the growth and maintenance of their bodies. It will food. All living organisms take food and utilize it to get energy for the growth and the maintenance of their bodies. Now next, green plants synthesize their food themselves by the process of, they are called, the green plant synthesize their food themselves by the process of, obviously all of you know that, photosynthesis. They are called phototrophic. Now next, dash energy is stored by the leaves with the help of chlorophyll. Dash energy is stored by the leaves with the help of solar energy, sun energy, sunlight se jo hoती hai. The dash derived nutrition from the dead decaying matter. It's fungi. You can write saprophytes also.
Plants like Cuscuta take food from host plant. Plants like Cuscuta yani amarbel take food from host plant. All animals are categorized as heterotrophic because they are depend their food for on plants either directly or indirectly. Dash is produced and dash is utilized during the photosynthesis. Dash is produced and dash is utilized. तो utilized क्या हो रहा है? Oxygen is produced and carbon dioxide is utilized during photosynthesis. Dash is the site of precipitation of light energy in leaves. यानी कि जो लाइट है जो एकत्रित की जाती है, ग्रहण की जाती है, रिसेप्ट की जाती है ऑन द लीव्स, वो कहां पर है? क्लोरोफिल पे. क्लोरोफिल द्वारा क्लोरोफिल कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. Now our next section is true or false. Here we have some true or false for you. So you have to give the answer in whether it is true or whether it is false. The first option is food is essential for all living organism. Food is essential for all living organism. Essential मतलब जरूरी है. True. Obviously it's true. The leaves are the food factories of plant. Again it's true. The next is water comes into leaves through stomata in the form of vapors. Listen very carefully. Water comes into leaves through stomata in the form of vapors. It's false because water comes into the leaves through vessels which is transported by roots. Plants utilize the carbon dioxide dissolved in the water absorbed by the roots for photosynthesis. Plants utilize the carbon dioxide dissolved in the water absorbed by the root for photosynthesis. It's false. Plant utilize the carbon dioxide dissolved in water. No. Plants take carbon dioxide from the air by the help of leaves hole which is called stomata. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Yes, is obviously true. Now, algae are saprotrophs. No, it's false. Algae is phototrophs. Cuscuta is a parasite. Yes, true. Saprotrophs take their food from dead and decaying matter. True. Insectivorous plants are partially heterotrophs. क्या होना चाहिए आंसर? What will be the answer? Okay, I will give you. It's true. अब आप कहोगे कैसे? How? Because insectivorous plant can prepare their food. They can prepare, but they are also need nutrients. They also need nutrients which they cannot get it because they are growing in the marshy area like that. So there we don't have the nutrients. For fulfill these needs, they eat insect. इस needs को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? They eat insect because from their body they get nitrogenous proteins. You also know the farmer gives also the crops to the crops nutrients, fertilizer like that. So these plants they are not getting any source from nitrogenous proteins. They eat insects for their fulfill their need. That is why you can say that they are partially heterotrophs because they are prepare their food. They can prepare carbohydrate, but they need nutrients also. For that need, they eat insect. So you can say that they are partially heterotrophs. Okay. The plants take atmospheric nitrogen through stomata and utilize as a nutrient. Plants take atmospheric nitrogen through stomata and utilize as nutrient. No. Through soil. They take that nutrients from the soil. Okay. Now we have finished. I hope आप लोगों को मैंने समझाने में मदद मिली होगी. ये चैप्टर नंबर 1 समझाने में आप लोगों को मदद हुई होगी. ओके. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटा.
और आपने ये पूरा प्रोग्राम जो हमारा देखा है, इस प्रोग्राम में निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और अभी मैं आपके साथ एक फीडबैक लिंक शेयर कर रहा हूँ। जिस फीडबैक लिंक में 10 क्वेश्चन है और आप 10 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और परसों जो है वो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 7 का, चैप्टर 2 परसों रहेगा, है ना। तो परसों जो है कितनी तारीख है, 10 तारीख है संडे को। तो संडे की जो टाइमिंग रहेगी वो 4 से 5 रहेगी, 4 to 5, 4 बजे से 4:15 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। तो 4:15 से 5 के बीच में हम लोग जो है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और या पहले से आई थिंक टाइमिंग उसकी भी 5:15 बजे, नहीं टाइमिंग 5:15 बजे की ही रहेगी। 5:15 बजे आप सब लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि उसकी टाइमिंग ऑलरेडी पहले से दिखाई दे रही है, 5:15 से 6, ठीक है। तो 5:15 बजे आप सब लोग जो है वो ज्वाइन करेंगे हमको, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये फीडबैक लिंक मैंने ग्रुप में आपके लाइव चैट में शेयर कर दिया है, आप लोग इसको फीडबैक फॉर्म जरूर भर लें। और इसमें एक ग्रुप दिया हुआ है, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप।